students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 9th chapter, that is Biomolecules, and today we are going to discuss another macromolecule, that is nucleic acid. Students, nucleic acid is a polymer of nucleotides. Like carbohydrates, it is a polymer of glucose units. Proteins, these are polymers of amino acids. Similarly, nucleic acid, which is a macromolecule, it is a polymer of nucleotides. And besides carbon, hydrogen and oxygen, which are present in other macromolecules as well, nucleic acid contain nitrogen and phosphorus as well. So nucleic acids contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. And very important, nucleic acid, it acts as the genetic material of our body. It controls our inheritance. Now what is inheritance? Inheritance means the transmission of characters from one generation to another generation. We are alike to our parents. Why? Because the genetic material, it has transferred from them to us. So nucleic acid, it acts as the genetic material and it is controlling our inheritance. So in our today's lecture, we are going to discuss about the structure of nucleic acid, the types of nucleic acid and the differences between DNA and RNA. So students, let's start it. Dear students, nucleic acid is a very important biomolecule of our body because it is the genetic material of our body. It stores all the biological information within itself and it is the building block of proteins. हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, whether they are enzymes or they are hormones, इन सब की formation जो है that is under the control of nucleic acid. So this nucleic acid is a very important biomolecule of our body. Now how these nucleic acid they were discovered? These nucleic acid was first discovered by a Swiss physician Friedrich Mischer in the year 1868, and he called the material nuclein because it was first found in the nucleus part of the cell, and he found it in the nucleus of the pus cells. So the nucleic acid was first discovered by Friedrich Mischer in the year 1868 and he named it nuclein because it was first seen in the nucleus part. Later on, Altman found that this nuclein, it is having acidic properties. So Altman changed the name from nuclein to nucleic acid. So nucleic acid was first discovered by Friedrich Mischer, who named it nuclein, but Altman changed the name from nuclein to nucleic acid because this nuclein was having acidic properties. So clear students? Next, what is the structure of nucleotides? We all know that nucleic acid, what is the structure of nucleic acid? Students, nucleic acid, they are the polymers of nucleotides. And nucleic acid, they are present in which part of the cell? They are present in the nucleus part of the cell and they play a very important role in the transmission of hereditary characteristics. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है या हमारा जो इनहेरिटेंस है, हमारी जो हेरिडिटी है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इन सब में न्यूक्लिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इन सब की इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन nucleic acid. So nucleic acid is a very important biomolecule. And we all know that nucleic acid, it is a polymer of nucleotide. It is a polymer of nucleotide. What does it mean? It means that when many molecules of nucleotides, they join with one another, then nucleic acid is formed. नाउ न्यूक्लियोटाइड के क्या कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट? एक न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज हैविंग 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकेंड इज द नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज द phosphate group. So these are the 3 components of the nucleotide. First, pentose sugar. Pentose sugar means 5 carbon sugar. Like we can see here in the structure that the
sugar which is present in case of nucleic acid, that is a 5 carbon sugar, and the sugar is either ribose or it is deoxyribose. Ribose sugar present है in RNA and deoxyribose sugar, this is present in case of DNA. But both these sugars, they are 5 carbon sugar. They are having total how many carbons? They are having 5 carbons. Second है student nitrogenous base, and nitrogenous base जो है they are of two types, purines and pyrimidines. Purines जो हैं they are of two types, adenine and guanine, whereas the pyrimidines they are of three types. They are of three types, uracil, thymine and cytosine. So these are the different nitrogenous bases which are present in case of nucleotide, and third is the phosphate group. So all of these three components they join together and they form one nucleotide. So first is a 5 carbon sugar, second nitrogenous base, and third is the phosphate group. So clear students, these are the components of nucleotide. Now nitrogenous bases which are present in case of nucleotide, they are of two types. First is purine and the second is pyrimidine. Second is the pyrimidine. Now students, purines जो हैं they are double membrane ringed. They are double membrane ringed. So examples क्या है purines के? Adenine and guanine. जबकि pyrimidines जो हैं वो single membrane ringed हैं, और इनमें examples हैं cytosine, thymine and uracil. सो साइटोसिन, थाइमिल, यूरासिल ये pyrimidines हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन रिंग्ड हैं, इनमें एक ही रिंग प्रेजेंट है. जबकि प्यूरिन्स जो हैं उनमें एग्जाम्पल है एडेनिन और ग्वानिन, और ये डबल मेम्ब्रेन रिंग्ड हैं, इनमें दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ student, we all know what is a nucleotide. A nucleotide is having three components: nitrogenous base, sugar and phosphate group. So this is when these three components they join with one another, then nucleotide is formed. Now what is nucleoside? When the base, nitrogenous base, it attaches with the sugar. So when the two components are present, one is the base and the second is the sugar, then it is known as nucleoside. Then it is known as nucleoside. And when this nucleoside, it attaches itself with the phosphate group, it becomes a nucleotide. क्लियर स्टूडेंट? सो न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है शुगर. नाइट्रोजनस बेस स्टूडेंट्स शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है बाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. So clear student, what is the difference between nucleoside and nucleotide? A nucleoside is having two components. One is the base and second is the sugar. Whereas a nucleotide is having three components: base, sugar and phosphate group. Now, this is also the structure of a nucleoside and nucleotide. In this structure, it is clear that when the sugar it attaches itself with the nitrogenous base, it is a nucleoside, and the base it is attached with the first carbon of the sugar. It is attached with the first carbon of the sugar, and this bond is known as glycosidic bond, and this is equal to nucleoside. And when the phosphate group it attaches itself with the nucleoside, then it becomes a nucleotide, and the phosphate group is attached with the fifth carbon of the sugar. Clear students? Structure of nucleoside and nucleotide. Next, how the two nucleotides they join with one another. Now student, this is one nucleotide and this is second nucleotide. Now see here clearly or properly that the phosphate group of one nucleotide, it is attached with the third carbon of the sugar of the next nucleotide. क्लियर स्टूडेंट्स? तो किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से आपस में ज्वाइन करती हैं? फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के तीसरे कार्बन के साथ अटैच्ड होगा.
इसी तरीके से सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप थर्ड न्यूक्लियोटाइड के शुगर के थर्ड कार्बन के साथ attach होगा, and in this way many molecules of nucleotides they will join with one another to form a nucleic acid chain. And जो bond formed हो रहा है between the two nucleotides, this bond is known as what? This bond is known as phosphodiester linkage. This is known as phosphodiester linkage. So students, I think this is clear to you that how the two nucleotides they join with one another. Phosphate group of one nucleotide, it is attached with the third carbon of the sugar of the next nucleotide, and in this way a long chain of nucleic acid is formed. Like see here that the sugar the nucleotide, the phosphate group of one nucleotide, it is attached with the third carbon of the next nucleotide. So in this way a long chain of nucleic acid that is formed, and we can see here कि जो backbone है nucleic acid की, that is formed of sugar phosphate groups. और जो nitrogenous bases हैं students, वो इस backbone के right angles पे हैं. They are at the right angles of the sugar phosphate backbone. और nitrogenous bases में students ये ध्यान रखना है, we all know कि purines they are of two types, adenine and guanine, and pyrimidines they are of three types, thymine, cytosine and uracil. Now student, a purine it always forms a bond with the pyrimidine. A हमेशा बॉन्ड बनाएगा T के साथ, एडेनिन इट फॉर्म्स बॉन्ड विद थाइमिन, और वी कैन से थाइमिन फॉर्म्स बॉन्ड विद एडेनिन, और ग्वानिन फॉर्म करेगा बॉन्ड विद साइटोसिन, एंड साइटोसिन इट विल फॉर्म बॉन्ड विद ग्वानिन. नाउ एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ अटैच्ड है विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच्ड है विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो न्यूक्लिक एसिड की जो बैकबोन है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो राइट एंगल्स पे हैं टू दिस लॉन्ग बैकबोन, and A always forms pair with T and G always form pairs with C. A is joined with T with two hydrogen bonds and G is joined with C with three hydrogen bonds. So in this way a long chain of nucleic acid it is formed. Now students, you all must have studied in your previous classes also that the nucleic acid it is of two types. One is RNA and the second is the DNA. और हम सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है स्टूडेंट्स? हम सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. स्टूडेंट्स, डीएनए मोस्टली जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, वेयर एज आरएनए जो है दैट इज़ मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड. सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के मोनोमर्स क्या हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. और आरएनए के मोनोमर्स क्या हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. बिकॉज न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स क्या थे? न्यूक्लियोटाइड्स. सो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स का है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए. एंड वी ऑल मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो nucleic acid. Now, DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. It is usually double stranded. और DNA की शेप कैसी है, फॉर्म कैसी है स्टूडेंट्स? डबल हेलिकल फॉर्म है. तुमने रिवॉल्विंग स्टेयर्स देखी होंगी और स्प्रिंग देखी होगी. द सेम इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए जो है दैट इज spirally coiled around a central axis. It is spirally coiled around a central axis. So इसको हम डबल हेलिकल फॉर्म कहते हैं क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं. डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड और इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो स्पायरली कॉइल्ड हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. डीएनए मोस्टली जो है दिस इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, बट सम पार्ट ऑफ द डीएनए इट ऑल्सो अकर्स इन सम ऑर्गेनालीज. कई सेल ऑर्गेनालीज में भी डीएनए प्रेजेंट होता है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast. And this DNA which is present in the nucleus,
that is acting as the genetic material of most of the organisms. Even we human beings are having DNA as the genetic material, and it carries the genetic information. नाउ स्टूडेंट्स, डीएनए की जो डबल हेलिकल फॉर्म है, दैट वाज उसका जो मॉडल तैयार किया था, दिस मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय टू साइंटिस्ट, वॉटसन एंड क्रिक, और इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला इन द ईयर 1965. So both of these scientists, they made a very famous double helical model to explain the structure of the DNA. सो स्टूडेंट्स, ये जो है मॉडल प्रिपेयर्ड हुआ था बाय दीज टू साइंटिस्ट, और दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए में हम देख रहे हैं कि जो डीएनए की बैकबोन है, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स, और डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो रन करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और दूसरा स्ट्रैंड रन कर रहा है इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. इसका मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर. और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कैसे भी, अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस दिया गया है, सो वी कैन ईजिली डिटरमाइन द बेस सीक्वेंसेस ऑफ द अदर स्ट्रैंड. वाई? बिकॉज ए पेयर्स विथ टी, A pairs with T and T pairs with A, बिकॉज हमें बेस पेयरिंग रूल पता है. सो बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग हम दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, बेस सीक्वेंस जो हैं, वो ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं. सो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं टू वन अनदर, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि इफ़ वी नो द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वी कैन ईजिली डिटरमाइन द बेस सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड. सो डीएनए की जो बैकबोन है, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वी कैन सी हियर दैट दीज नाइट्रोजनस बेसिस, दे आर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग बैकबोन ऑफ द डीएनए. और ये देखो डीएनए जो है, दैट इज़ ये डबल हेलिकल मॉडल है. डबल हेलिकल मॉडल मीन्स डीएनए जो है वो स्पायरली कॉइल्ड है अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. और डीएनए की एक कंप्लीट टर्न जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ हैविंग अ लेंथ ऑफ 3.4 नैनोमीटर. और एक कंप्लीट टर्न जो है डीएनए की, इस कंप्लीट टर्न में टोटल कितने बेसेस हैं स्टूडेंट्स? 10 बेसेस हैं. सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स? 3.4 divided by 10 equal to 0.34 नैनोमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? और डीएनए का जो डायमीटर है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 नैनोमीटर. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन हिज मॉडल. क्लियर स्टूडेंट्स? सो डीएनए जो है वो डबल हेलिकल राइट हैंडेड डबल हेलिकल मॉडल है, स्ट्रक्चर है डीएनए की. राइट हैंडेड का मतलब होता है कि इसकी जो कॉइलिंग है, दैट इज़ इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और डबल मीन्स बिकॉज द डीएनए इज़ मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड. हेलिकल मीन्स वो स्पायरली कॉइल्ड है अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, और जो डायरेक्शन है कॉइलिंग की वो क्लॉकवाइज है. इसीलिए हम कई बार ये टर्म यूज़ करते हैं राइट हैंडेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो ये दिखाया गया है जैसे रिवॉल्विंग स्टेयर्स होती हैं, द सेम इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. डीएनए लुक्स लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयर्स. नाउ चार्गव साइंटिस्ट का नेम है स्टूडेंट्स. चार्गव ने कुछ बेस पेयरिंग रूल्स दिए थे, और ये बेस पेयरिंग रूल्स क्या कहते हैं कि डीएनए में जितना अमाउंट प्यूरिन्स का है, द सेम इज़ द अमाउंट ऑफ pyrimidines. So the amount of purines is always equal to the amount of pyrimidines, and A is always equal to T and G is always equal to C. ये तुमने बेस पेयरिंग रूल जो है वो याद रखना है. और नेक्स्ट +2 में हमने ये सभी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में करनी है. एंड ऑल द बेस पेयर्स व्हेन दे आर एडेड, दे आर इक्वल टू 100. सो दिस इज़ द बेस पेयरिंग रूल विच वॉज गिवन बाई चार्गव. नाउ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम्स क्या है? न्यूक्लियोसोम्स स्मॉल बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विजिबल होते हैं व्हेन वी टेक द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ्स ऑफ द डीएनए. एक्चुअली डीएनए जो है, दैट इज़ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it is present within a very small size nucleus that is of the size
10⁻⁻⁻6 मीटर। तो डीएनए की अप्रॉक्सीमेट अगर हम लेंथ देखें तो वो 2.2 मीटर होती है। तो इतना लंबा जो थ्रेड है डीएनए का, हाउ इट इज़ पैक्ड विद इन अ वेरी स्मॉल साइज न्यूक्लियस। तो डीएनए की जो पैकिंग है वो अपोजिट चार्ज करेगा। वी ऑल नो दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। तो डीएनए की पैकिंग जो है वो स्टूडेंट बेसिक प्रोटीन्स करते हैं। ये जो येलो पार्ट दिखाया गया है, दीज आर दी बेसिक प्रोटीन्स जो कि डीएनए की पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं, सो दैट डीएनए जो है विद इन अ वेरी स्मॉल साइज न्यूक्लियस में एकोमोडेट हो सके। So nucleosomes, they are the repeating globular subunits of chromatin that consist of a complex of DNA and histones. And what are histones? Histones, they are the basic proteins which help in the packing of the DNA. Clear, students? Now next is the RNA. RNA is ribonucleic acid and it is mostly single stranded. It contains again it is formed of ribonucleotides, and each ribonucleotide it contains phosphate group, sugar and nitrogenous base. Now student, ये ध्यान रखना है what is the difference between DNA and RNA। अगर हम उसका structural difference करते हैं तो DNA के अंदर sugar है deoxyribose, whereas in case of RNA the sugar is ribose। और DNA में nitrogenous bases हैं A, T, G and C, whereas in case of RNA the nitrogenous bases they are A, U, G, C। तो हम क्या देख रहे हैं कि RNA के केस में जो थाइमीन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, और वी कैन से कि RNA में थाइमीन एब्सेंट है and DNA में uracil that is absent। and RNA it is also a long polymer of ribonucleotides, और ये ribonucleotides आपस में attached हैं with the help of phosphodiester linkages। Now student, this RNA is of three types. First is the messenger RNA mRNA, second is the ribosomal RNA and third is the transfer RNA। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है that is the ribosomal RNA और the rRNA। स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए जो है along with proteins, when it combines with basic proteins it forms ribosomes, and we all know that ribosomes they are the protein factories of our body। जितना भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमारी बॉडी में that is synthesized in the ribosomes। So ribosomal RNA जो है along with basic proteins it helps in the formation of ribosomes, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? राइबोसोमल RNA का है। नेक्स्ट 15% RNA जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA नाम से लगता है कि ये मैसेज लेके आया है फ्रॉम द DNA अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू बी सिंथेसाइज्ड। अब ये मैसेज क्यों लेके आया स्टूडेंट डीएनए से? डीएनए जो है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दिस डीएनए इट कैन नॉट कम आउट थ्रू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। सो डीएनए क्या करेगा? अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र करता है, और मैसेंजर आरएनए बीइंग स्मॉलर इन साइज वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। इसीलिए मैसेंजर आरएनए को हम इंफॉर्मेशनल आरएनए भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू बी सिंथेसाइज्ड। और थर्ड स्टूडेंट दैट इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए हम देख रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, बट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसने 2D फॉर्म ले ली है। ट्रांसफ़र आरएनए 2D फॉर्म में क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ की तरह लौंग के पत्ते की तरह दिखने में लगता है, और अगर इसका 3D मॉडल तैयार किया जाए तो ये L लेटर को रिजेंबल करता है। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है स्टूडेंट? ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को कैरी करता है, इट कैरीज दी अमाइनो एसिड्स। सो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके आया, मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन को रीड करके करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड कौन लेके आता है? ट्रांसफ़र आरएनए लेके आता है, और इस तरीके से प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, ये हमने सारी चीज़ें डिटेल में करनी है इन आर +2 क्लास, बट अब जस्ट तुम्हें सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, और ट्रांसफ़र आरएनए की परसेंटेज कितनी है? ओनली 5% ऑफ द टोटल आरएनए।
Now student, we all know that ribosomal RNA along with the basic proteins, it has formed what? It has formed ribosomes, and these ribosomes, they are 70S in prokaryotes and they are 80S in case of eukaryotes. So ribosomal RNA, it has formed ribosomes upon combination with basic proteins. Now what are the differences between DNA and RNA? DNA mostly double stranded है, whereas RNA is mostly single stranded. DNA के केस में जो शुगर है that is deoxyribose, RNA के केस में जो शुगर है that is ribose. In DNA, thymine is present whereas uracil is absent, whereas in case of RNA, uracil is present and thymine is absent. Now, RNA being single stranded, ये चार्गफ रूल फॉलो नहीं करता, whereas DNA being double stranded, it follows the चार्गफ रूल, जो मैंने तुम्हें बताया है that the amount of adenine is always equal to thymine and the amount of guanine that is always equal to cytosine. तो because RNA single stranded है, so it never follows the चार्गफ rule, and DNA being double stranded, it follows the चार्गफ rule. Now RNA, it can be easily destroyed by alkalis to cyclic diesters, whereas DNA resists the action of alkalis. DNA, it cannot be destroyed by bases or alkalis because DNA के second position, जो sugar की second position है, second carbon है, उस पे OH group attached होता है. Now RNA relatively a labile molecule है, undergoes easy and spontaneous degradation, whereas DNA जो है that is a stable molecule. So RNA is very unstable, easily जो है वो degrade हो रहा है, whereas DNA जो है that is a stable molecule. DNA जो है वो DNA की degradation जो है that is very slow. So the genetic material, it can be stored within DNA for years without any change. Now RNA, it mainly occur in the cytoplasm, but small amount is also present in case of nucleus, whereas the DNA, it mainly occurs in the nucleus. And we all know that small amount of DNA is also present in some organelles like mitochondria and plastids or chloroplast. And the length of the RNA, that is very small, about 100 to 500 5000 base pairs long, whereas the length of DNA, that is very large because the DNA, it is made up of millions of base pairs. So students, this was all about the study of the last biomolecule of this chapter, that is the nucleic acid. We have done in detail about the structure of nucleic acid, its types, DNA and RNA, and what are the differences between DNA and RNA. So students, thank you.